Good morning, student. Today we will start our new session with a grammar, introduction of a grammar and basic English grammar. We have to cover different type of topics in this particular grammar course for higher level student of high school as well as lower level students of high school. I will explain that into the English, then I will use Hindi language, and after that regional language, Marathi language I will use for the description. But most important part is like that way that you have to understand it very properly. That is the most important thing. Remember one thing, when you will go to the home, when you will watch this particular video, at that time you have to just watch the video properly, try to make the sentence according to the given things in the video and try to imitate that, try to practice it at home. Firstly, but my dear friends, today we will start with the tense. I am not starting with basic thing like part of speech. I am starting with the tense and maybe the changes in the pronoun. After finishing this particular tense, if doubt will be there, then I will think about the pronoun and the subordinating, not a subordinating, maybe supporting verbs. I will give the details about that in the next video. Today we will start the new video of a tense. One thing we have to think about that in this tense I will explain one tense each, one subtense each. Maybe every day I will explain one subtense so that you can understand that how that subtense can be used in a daily use of English writing as well as English speaking. If you have got any doubt, then write in the comment in a YouTube channel or on a YouTube channel, or maybe I will give you my number, mobile number, WhatsApp number. I think number of students have got my mobile number. You can contact me related to the problems, related to the queries, related to the taught subject. Now I will start with the English grammar, and first lesson, first video we will make about the tense. And maybe you know there are three main tenses are there: present tense, past tense and future tense. We will think about single subtense every day, and then in a details we will think about its use in English language. So my dear friends, we will start our journey from today about the English grammar. Thank you very much. Now look, my dear friends, how many tenses are there? You know how many tenses are there in English. But remember one thing, that what is mean by tense, that is the most important part. Tense means that word is derived from the one Latin word. The main word in a Latin was called as a tensi. Tensi means time denoting thing. In a simple way, what is mean by tense? Tense means time denoting structures. Time denoting structures in the English language or in English grammar, that is called as a tense. One by one we will think about each and every tense. Firstly, I will start with the present tense. Remember, first tense we have to discuss, that is about the present tense. And in present tense, main tense is a simple, first tense will be the simple present tense. पहला टेंस जो प्रेजेंट टेंस में है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कि हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल इन मराठी इसे क्यों कहा जाता है कि वो सर्वसाधारण चीजें, जनरल थिंग्स इन अ प्रेजेंट टाइम्स दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुअल एक्शंस दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू यूज द प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रॉपरली, I have divided this simple present tense
into three parts. One by one I will explain that to you and you have to just understand it very properly. मैं आपके समझ के लिए या अच्छी तरीके से ये टेंस समझ में आए इसलिए मैंने इस टेंस को जो है वो तीन अलग अलग फॉर्मूलाज में डिवाइडेड किया है और उसके अनुसार आपको वो टेंस बोलने में इस्तेमाल करना है और लिखने में इस्तेमाल करना है. सिंपली आई विल स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वी विल थिंक अबाउट इट्स यूज. आई एम जस्ट इरेजिंग इट and again I will write on the board simple present tense. Remember one thing, simple present tense. Now it is called as a सामान्य वर्तमान काल या मराठी में कहा जाए तो सामान्य वर्तमान काल. सामान्य मीन्स जनरल थिंग्स. It is called as a simple indefinite tense in some books, but it is same. Simple present tense means सामान्य वर्तमान काल. सर्वसाधारण जो घटनाएं वर्तमान काल में घटती है उसको दिखाने के लिए हम सामान्य वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ जनरल फॉर्मूला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सभी बुकों में अवेलेबल है. इट इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. लेकिन हमें इसके ऊपर और भी काम करना है, हमें इसके ऊपर और भी डिटेल्स में देखना है. उसके लिए मैंने इस टेंस को और तीन पार्ट में डिवाइड किया है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज आई हैव डिवाइडेड दिस टेंस इनटू द थ्री सब टेंसेस व्हिच आर दे वी हैव टू लुक. फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज अ स्थिति दर्शक. स्थिति दर्शक or we can say condition showing simple present tense. Now स्थिति दर्शक means what? जब हमें वर्तमान काल में किसी सब्जेक्ट की स्थिति दिखानी है उसको दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर्मूला दैट आई हैव मेड इज सब्जेक्ट am ऑब्लिक is ऑब्लिक are plus object. Now look here, what is, with the help of examples we can find out that how this particular formula of a simple present tense can be used in an English language for writing purpose as well as for the daily use. Now look my friends, first example, Ram is a student. When we think about Ram is a student, I am telling, I am stating, I state here that in a present time Ram is a student. मैंने इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताने की कोशिश की है कि राम एक विद्यार्थी है. राम एक विद्यार्थी आहे. तो कधी आहे, वो कब है, वो आज के प्रेजेंट टाइम में वो एक स्टूडेंट है या वो एक विद्यार्थी है. अगर आपको कोई भी कंडीशन प्रेजेंट टाइम की दिखानी हो तो यू कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस कंडीशन फॉर्मूला और वी कैन से स्थिति दर्शक फॉर्मूला ऑफ सामान्य वर्तमान काल और सिंपल प्रेजेंट टेंस. What is the important part, my dear friends, when we will watch the first example? Ram is a student. Who is a student? Ram is a student. Now, what is Ram here? That some people have got the question in their mind. Ram is a subject. Is a supporting verb, or I can say it is a main verb, and a student is an object. Remember that for the grammatical purpose it is somewhat complicated. Don't think about that. If you got the problem in subject verb object, I will explain that into the next video. But what is the important thing that we have to think about, that in this example we can say that Ram is a student, Ram is a subject, is a supporting verb used as a main verb, and a student is an object.
Now, what is the main aim of this particular formula? That we are using that formula to state the condition in the present time. I am writing the second example. I am a teacher. When I will write like that way, when I have written this particular word or the sentence on the board, at that time it is stating like that way that I am a teacher. I am telling my present condition to you, my dear friends. I am a teacher means what? मैं शिक्षक हूँ, मी शिक्षक आहे. This is the condition of a present time. When we will think about this, at that time there are number of examples. I can say to you that you are students means what? आप विद्यार्थी हो. India is my country. What is the meaning of that? भारत मेरा देश है. It is a present condition. In Marathi we can say भारत माझा देश आहे. It is the condition of a present time. To show the condition of a present time, to tell the condition of a present times, we can use, my dear friends, this formula of a simple present tense that is called as a conditional formula of simple present tense. Now, one important thing, that number of time when we are writing essays, at that time we have to use in a descriptive essays as well as in a informative essays, we have to use the simple present tense in a larger scale, because it is stating the conditions, telling the truth, telling the actions which happens in present times. ज़्यादातर निबंध लिखते समय आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ओवरऑल इस्तेमाल करना है. जैसे कि ये पूरा टेंस जो है हमें इंफॉर्मेटिव एसे और डिस्क्रिप्टिव एसेज में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है. बट एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि ये जो चीज है, ये जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमें बोलते समय, अंग्रेजी बोलते समय या इंग्लिश बोलते समय हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए. नाउ अगेन आई विल टेल यू इन डिटेल्स दैट सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, एम इज आर सपोर्टिंग वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स कर्म इन हिंदी और इन मराठी. नाउ वन थिंग, when we think about this particular two sentences, it is telling the condition of Ram and it is telling the condition of mine. It is telling the condition of me, that what is I in present time, that is told by this particular sentence. We can simply say दोनों भी वाक्य यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट समय में, वर्तमान काल में दोनों भी कर्ताओं की या सब्जेक्ट की स्थिति क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं. मैंने और भी एग्जाम्पल दिए, जैसे इंडिया इज माय कंट्री, यू आर स्टूडेंट, दिस इज माय क्लासरूम, दिस इज योर क्लासरूम. दिस इज द ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर द कंडीशन ऑफ सिंपल, आर द conditional sentence, or it is the example, it is the every example is example of a condition showing sentence in the present time. So first, most important formula of simple present tense, it is a general formula of a simple present tense. Every time in the book you will find out this type of the formula. कभी भी आप कोई भी ग्रामर की किताब देखते हो, कधी पण तुम्ही एखादं पुस्तक ग्रामरचं पाहत असाल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला पाहायला मिळू शकतो. बट वी हॅव डिवाइडेड दॅट इनटू द थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट which we have seen, it is a simple present tense conditional formula, and these are two examples. Here we are telling about the condition of subject in general present times.
I think you will understand from this particular formula. Now we will think about the second formula of a simple present tense. Now my dear friends, I will write the formula on the board and I will explain it that how that formula can be used to show the actions, general actions which happens in a present time, how that can be stated. With the example of the formula I will state that to you. अभी मैं आपको एक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, या क्रिया जो वर्तमान काल में हमेशा घटती रहती है उसको किस तरीके से बताया जा सकता है, उसके बारे में अभी हमें दिए हुए फॉर्मूला से कुछ तो सीखना है. सेकंड फॉर्मूला वी कैन से इट इज अ एक्शन फॉर्मूला. Action means what? Actions mean kriya, and formula will be subject, verb, yes or es plus object. That is the most important part. That what is the formula? That subject plus verb, yes and es we will use as a suffix and the object will be there. Two simple examples I will write and then we will think about its description. Example, Ram eats a mango. Here it is a general statement which I have given in a present time. मैंने यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि जो एक्शन हमेशा राम करता होगा या अभी करता है, कौन से समय में करता है, प्रेजेंट टाइम में करता है. क्या कहा है? सब्जेक्ट इज अ राम, ईट्स इज अ वर्ब, अ मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ लुक एट दिस, दैट राम ईट्स अ मैंगो मीन्स व्हाट इन हिंदी? व्हाट इज द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन विल बी लाइक दैट वे, दैट राम आम खाता है. राम आम खाता है. राम कौन सी क्रिया कर रहा है? तो खाने की क्रिया कर रहा है, तो ये वर्ब है. राम हमारा सब्जेक्ट है और अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ अगेन आई विल एक्सप्लेन विथ अ डिफरेंट वे. व्हाट इज राम? मे बी नॉट अ डूइंग. व्हाट डज राम डू? रिमेंबर वन थिंग, राम यहां पे क्या कर रहा है वर्तमान काल में? वो खाने का काम कर रहा है. क्या खाने का काम कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है. What is the formula is stating to us? Action means क्रिया. कब की क्रिया? सामान्य वर्तमान काल में जब कोई डूअर या सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है, वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. अगेन आई विल स्टेट लाइक दैट वे, एक्सप्लेन इन टू बोथ लैंग्वेज. राम ईट्स अ मैंगो. कौन आम खाता है? राम आम खाता है. कब खा रहा है? अभी खा रहा है. ऐसा हम मान रहे हैं जनरल प्रेजेंट टाइम में उसका आम खाना चल रहा है. चल रहा है क्या मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, चलता है, वो करता है इस तरीके से, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है. नाउ सेकंड एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी day. Now what is important part here? It is the habitual sentence, that it is the condition of any person who go to school every day, or habit. To show the habit we are using the simple present tense action formula also. Means I go to school. Who goes to school? Who go to school? We can say I go to school. Sorry for the some wrong, we can say pronunciation. But who go to school? I go to school. I means what? मैं स्कूल जाता हूं. लेकिन कब जाता हूं? एवरी डे. हैबिट दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. Who go to school every day? Then answer will come I. What may be action he
that particular subject is doing, he is going to the school. But general actions, general habits which we are performing in a present times to show that we are using simple present tense action formula. Now one important fact here, that I can give another example to you, my friends. When I will say sun rises in the east, at that time also I am using here simple present tense. What is the example? Sun rises in the east. सूरज पूरब में उगता है. सूर्य पूर्वेला उगवतो. It is a universal truth. It is a universal truth. To show the universal truth also, we are using the simple present tense. Again, another example, I can say, earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. What is the important fact here? It is also the universal truth that earth is revolving around the sun. At that time, one example is very important, that to show the universal truth, we are using simple present tense in our general presentation of a present time, as well as we can say to show the general things happen in a present times, we are using simple present tense. But here we are thinking about the action. Why action? Because subject is doing some work here. Subject do, subject does some action here, so that we are using simple present tense action formula. Here Ram does the act of eating. Here I do the act of going to school, to show general actions which happen in present time. We are using action formula of a simple present tense. Now my dear friend, one question will come, that like that way, that how we are using yes and es. Why I have used the first form of the verb? These two forms are the first form of the verb. But why I have used that in this particular example like that way? When Ram is a proper noun, when it will come, I have put yes in front of a main verb, and when I pronoun will come as a subject, at that time I haven't used yes or es to the main verb. Why that is happening? We will think about that in a details in a next video. But remember one thing, when you have to show the actions which would happen in general present time, to show that you have to use this formula of a simple present tense, subject plus verb in bracket, yes oblique es plus bracket complete plus object. That type of a formula you have to use in a grammatical construction, at the time of a speaking also, at the time of a writing also, in a English grammar. Now again, I think you will understand from that description. If you will not understand that particular description properly, just give the comment in a YouTube channel or on comment section. I will explain that into details. But what is the important part? We have seen the second formula of a simple present tense, and that is action formula, that is used by us in a description of a simple present tense general actions. Now I will think about third formula, my dear friends. Third formula, but most important formula about the simple present tense. What is the third formula? It is called as a possession formula. What is meant by possession? In Hindi, it is called as a अधिकार. यानी possession का मतलब क्या?
हिंदी में या मराठी में उसे अधिकार कहा जाता है। अभी उसे अधिकार क्यों कहा जाता है, दैट्स वी हैव टू लुक, दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड देयर एग्जांपल्स। नाउ सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्ड possession section of a simple present tense. Now my dear friends, when we think about the possession, that shows the possession of a subject, that shows the possession which is there, possessions which is there related to the main subject, to show that we are using this formula of a possession. Now one thing, I will write examples so you can understand it very properly. Now look here, I have a bike. Now second one, Aradhya has a car. Now these are the two examples. I think some students, किसी को भी, कुछ स्टूडेंट्स को या किसी को भी ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है कि आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, मेरे पास दुपहिया सवारी है। आई विल नॉट यूज द प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज बट आई कैन यूज सिंपल हिंदी लैंग्वेज दैट आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। मतलब क्या है कि वो बाइक का मैं मालिक हूं, वो बाइक मुझे बिलोंग करती है, वो बाइक मेरे जो है मेरे पास है, मैं उसका मालिक हूं। ये दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पोजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, मीन्स व्हाट, मैं उस बाइक का मालिक हूं। आई हैव अ बाइक, हियर आई इज अ सब्जेक्ट, हैव इज अ सपोर्टिंग वर्ब, अ बाइक इज एन ऑब्जेक्ट। Now second example is very important. Aradhya has a car. Who has a car? Aradhya has a car. Means आराध्या के पास क्या है कि आराध्या के पास एक कार है, मीन्स वो उसके अधिकार में है, वो कार उसके अधिकार में है, वो कार उसकी खुद की है। हमें वो दिखाना है कि उसके पास क्या है, तो वी कैन उसका किसी भी सब्जेक्ट का अधिकार दर्शाने के लिए हम वर्तमान काल में अगर वो अधिकार दिखाना है तो हम पोजेशन शोइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज दैट? आराध्या हैज अ कार, आराध्या के पास कार है, आराध्या उस कार की मालिक है। आई हैव अ बाइक, आई हैव एन अम्ब्रेला, दैट टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी कैन यूज to show the possessions of our own in a simple present tense, general possessions which we possess at the time of the present, to show that we can use the simple present tense। यानी अगर हम देखें कि हमें वर्तमान काल के अंदर हमारे पास क्या क्या possessions है, वो अगर दिखाने हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। My dear friends, this is a very basic English formulas. These are very basic English formulae. At that time, why I have used this type of the formulas in a simple present tense? I have used three formulas. Actually, the main formula of a simple present tense is subject, verb plus object. But it is a general formula. To distinguish that formula according to the use and according to the meaning, I had made three formulas. One is condition showing formula, second one is action showing formula, and third one is possession showing formula. अंग्रेज सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोलते समय और लिखते समय सही इस्तेमाल करने के लिए मैंने तीन फॉर्मूला आपको बताए। एक था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशन का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था एक्शन का फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला था वो था पोजेशन का फॉर्मूला। व्हाट डू
I want from you, use that particular formula in your writing, in your speaking, and I am giving you one task. What is the task? That with the help of these three subtenses of a simple present tense, you have to make one essay from it. You have to make an essay from it. Try to write an essay with the help of three formulas of a simple present tense and post it on a YouTube channel. My YouTube channel, that is called as a Bhasha Dynamics. You can just give your essay, post your essay in comment section, or maybe you can write related to your essay on my WhatsApp number. I will just watch it and find out how you have written that particular essay and what type of mistakes are there. Again, I want to tell you, don't afraid of making mistakes. Make number of mistakes, but don't give up the hope. One day you will just understand grammar very properly. Thank you very much, my dear friends, for your support.